Hi friends, welcome to my channel EHS Knowledge। आज हम स्कैफोल्डिंग सेफ्टी के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। तो स्कैफोल्डिंग सेफ्टी में वी विल सी व्हाट इज स्कैफोल्डिंग, टाइप्स ऑफ स्कैफोल्डिंग, स्कैफोल्डिंग पार्ट्स और कंपोनेंट्स, हजार्ड्स इन स्कैफोल्डिंग, प्रिकॉशंस इन स्कैफोल्डिंग आदि जानकारी हम इस वीडियो में लेने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलो हम स्कैफोल्डिंग सेफ्टी का डिटेल्स में जानकारी ले लेते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग इज अ टेम्पररी स्ट्रक्चर मेड ऑफ वुड, स्टील और अदर मटेरियल्स दैट प्रोवाइड्स अ सेफ एंड स्टेबल प्लेटफॉर्म फॉर वर्कर्स एंड मटेरियल्स ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस, रिपेयर एंड प्रोजेक्ट वर्क। सो फ्रेंड्स, स्कैफोल्डिंग एक ऐसी सुविधा है कि जिसके माध्यम से आप हाइट पे काम कर सकते हो and which gives stable platform for working at height for the workers and keeping the materials, especially during construction, maintenance, repair and project work। जहाँ जहाँ अपना कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है या मेंटेनेंस का काम करना है या प्रोजेक्ट वर्क का काम करना है, इसके लिए इस स्कैफोल्डिंग का इस्तेमाल किया जाता है। सो नाउ डेज wooden scaffolding is banned by most of the industries or ISO companies. They are not allowing any wooden scaffolds or even wooden ladders also. So we'll go next. There are 6 types of scaffoldings, which are static scaffolding, then independent scaffolding, then bird cage scaffolding, then cantilever scaffolding, then hanging scaffolding, and sixth one is mobile or towel scaffolding। So इसके बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। So सबसे पहले स्टैटिक स्कैफोल्डिंग। स्टैटिक स्कैफोल्डिंग यानी कि जहाँ हमको कंस्ट्रक्शन करना है उसके साइड में ये स्टैटिक स्कैफोल्डिंग का इरेक्शन किया जाता है, यानी कि इसमें बिल्डिंग का स्ट्रक्चर का सपोर्ट लेके स्कैफोल्डिंग इरेक्ट किया जाता है, स्पेशली फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस। सो दिस इज स्टैटिक स्कैफोल्डिंग। इंडिपेंडेंट स्कैफोल्डिंग्स मीन्स इट इज़ सेपरेटली इरेक्टेड बाय नॉट टेकिंग एनी सपोर्ट ऑफ द बिल्डिंग और बिल्डिंग स्ट्रक्चर। बिल्डिंग स्ट्रक्चर का कोई इस्तेमाल इसमें नहीं होता है। इट इज़ इंडिपेंडेंट स्कैफोल्डिंग्स बाय यूजिंग 2 रोज या 2 बेस बोलते हैं हम लोग, बाय गिविंग द एडिशनल सपोर्ट्स एंड क्रॉस ब्रेसिंग्स। इसको इस्तेमाल करके पूरा फर्मली इंस्टॉल किया जाता है। दिस इज़ ऑल्सो यूज फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। नाउ बर्ड केज स्कैफोल्डिंग्स is used especially for maintenance purpose, या कोई डक्ट का काम करना है या मेंटेनेंस का काम करना है। इसमें more than 2 rows आर एग्जिस्टिंग एंड काफ़ी लेंथ वाइज भी ज़्यादा रहता है एंड विड्थ वाइज भी ज़्यादा रहता है एंड ओवरऑल बिग साइज़ का प्लेटफॉर्म्स रहता है जिसमें से आदमी प्रॉपर एक्सेस के थ्रू ऊपर जाके काम कर सकता है एंड बाय यूजिंग of course by using the proper PPEs. So this is bird cage scaffolding. Now fourth one is cantilever scaffolding, यानी कि अपना scaffolding के बाहर this is a projected scaffolding बनाया जाता है। This is called cantilever scaffolding। और स्पेशली जहाँ अपना कोई रिस्ट्रिक्शन है या नीचे से आप सपोर्ट देके स्कैफोल्डिंग नहीं बना सकता है, उसी टाइम्स इसका कैंटिलेवर स्कैफोल्डिंग का
इस्तेमाल किया जाता है। नाउ दिस वन इज़ हैंगिंग स्कैफोल्डिंग, और उसको सस्पेंडेड स्कैफोल्डिंग ही बोला जाता है। बाय यूजिंग विंच के माध्यम से ये स्कैफोल्डिंग्स अप एंड डाउन किया जाता है, स्पेशली यूज फॉर द क्लीनिंग ऑफ द ग्लास या ग्लास पेंस या कुछ मेंटेनेंस का काम करना है, स्पेशली फॉर हाई राइज बिल्डिंग का इसका इस्तेमाल होता है। एंड दिस इज़ वेरी यूजफुल फॉर मेंटेनेंस पर्पस बेसिकली। इसमें दोनों साइड में एक विंच आएगा, या उसका मोटराइज सिस्टम्स भी आप यूज़ कर सकते हैं, ताकि ऊपर नीचे लेने के लिए या छोड़ने के लिए आसान हो सकता है। सो दिस इज़ कॉल्ड हैंगिंग स्कैफोल्डिंग और सस्पेंडेड स्कैफोल्डिंग। सस्पेंडेड यानी कि कोई रिफाइनरीज है या समुंदर के अंदर जाके जो स्ट्रक्चर रहता है या पाइपलाइंस रहता है, एंड नीचे से आप उसको स्कैफोल्ड इरेक्ट नहीं कर सकते हैं। there are restrictions to erect from the bottom, so that from pipe bridge we can use such type of scaffolds for doing the work at heights. So this is about hanging scaffolding or suspended scaffolding, and this one is the mobile or tower scaffolding. इसको कैस्टल व्हील्स रहते हैं, फोर व्हील्स are provided, and person can move these scaffolds from one place to another place. And this one is used for basically from one place to another place, हो या number of places में आपको कुछ काम करना है वर्क एट हाइट में, तो इसका इस्तेमाल किया जाता है। Important point is that while moving scaffolds there should not be anyone working above the platforms, or we have to take the extra precautions while moving below the tower lines or the power lines. So कभी कभी बहुत सा बार इसका हाइट ज़्यादा रहता है, तो उसको पावर लाइन को टच होने की संभावना रहती है, ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं। तो टू प्रिवेंट दैट we have to take care while taking this scaffold from one place to another place. Okay, now this is an important slide, and we have to understand basically the scaffolding parts or the scaffolding components. So we will start from the bottoms. So first one is सोल बोर्ड। सो जहाँ आपको लगता है कि सॉइल लूज़ है, तो ऐसे कंडीशन में सोल बोर्ड का इस्तेमाल करना ज़रूरी रहता है। सो फर्स्ट वी हैव टू पुट द सोल बोर्ड्स, एंड देन दिस इज़ द फर्स्ट वन, एंड सेकंड वन इज़ बेस प्लेट। देन अबव द सोल बोर्ड्स वी हैव टू पुट द बेस प्लेट। जहाँ आपको इरेक्शन करना है या आपको स्टैंडर्ड्स या उसको पोस्ट बोलते हैं, पोस्ट इरेक्ट करना है, तो उसके बॉटम में आपको पहले बेस प्लेट लगा के रखना चाहिए। सो दिस इज़ हो गया सेकंड। देन वी हैव टू इंस्टॉल द पोस्ट, और स्टैंडर्ड्स बोलते हैं हम लोग। वी हैव टू इंस्टॉल standards, and after installing the standards we have to start with the base lift या kicker lift बोला जाता है। सो पहले kicker lift का पूरा असेंबली किया जाता है। दिस इज़ अ kicker lift when there is a long length, this is a long length, so horizontal types जो आपका पाइप रहता है उसको रनर्स या लेजर बोला जाता है। एंड नेक्स्ट वन इज़ विड्थ में जो हम इस्तेमाल करते हैं उसको ट्रांसम बोला जाता है। ठीक है, सो ये हो गया 6। दिस इज़ अ 6 विच इज़ यूज बिलो द प्लेटफॉर्म्स, विच इज़ कॉल्ड एज द ट्रांसम और पेयरर्स।
सो ट्रांसम एंड रनर्स और लेजर्स यूज़ करके आपको किकर लिफ्ट का असेंबली करना है. Then start with the first lift. This is around 1.8. First lift is 1.8, and we have to use the ledgers and transom as discussed earlier. And after that we have to use the longitudinal bracings and transverse bracing. So this is longitudinal bracings. This is the longitudinal bracings which is shown by the arrow, and this is called the transverse bracings. So this is a transverse bracing, this is transverse bracing, and back side which is shown is a longitudinal bracings. So longitudinal bracings and transverse bracing is used to stabilize the scaffold. Yeah. Increase the strength of the scaffolds, can say like this. After completing this, then we have to go for platforms, platform erections, where it will cover as a planks, starting with the planks. So we have to use the planks. This is the planks, we have to use planks, and after planks we have to use the we have to install the mid rail, we have to install the mid rails, then we have to install the top rails. This is the top rails, and this is a mid rail, and then we have to install the toe boards. Toe board is installed because no any tools or any items fall down from the heights. So for dimension wise बात करना है, this is about the 150 mm, and height of the top rail from the platform is around 1 to 1.2 meter, and this is a mid rail we can install at 60 centimeter or 50 centimeter. ठीक है. So the likewise we have to install the scaffolding. Most important is to join all the parts. We have to use the couplers or swivels, we can say. So couplers is important to assemble the pipes or these components like ledgers and runners or longitudinal bracings or transverse bracings and mid rail, top rails, and drop bar also. Drop bar is also installed to increase the stability or to prevent the fall of the person from heights. So likewise we can install the scaffolding. So this is a ideal picture of scaffolding. From that we can learn how to erect the scaffolding. And last important components or part is the ladder. So this is also important. The ladder shall be fixed as we have discussed in the last video also. The angle to horizontal is 70 degree, and we have to tie up these ladders at the both side, that is the top side and that is the bottom sides. The 1 meter, as per the rules, ladder rules, 1 meter should be kept above the landings, as we have discussed in previous videos. You can refer the previous video on ladders. It will be made easy to you. So this is the erection method of the scaffolding, and while dismantling we have to take the reverse activities. I think I have explained in very well manner, so you might have understand the systems of scaffolding. Next topic is hazards in scaffolding.
So what are the hazards in scaffolding use? या scaffolding use करते समय क्या क्या hazards हो सकता है? Basically fall from heights. So fall from height is due to lack of guardrail, improper access और unsafe practices. अगर आप अनसेफली काम कर रहे हैं या आपके स्कैफोल्डिंग के ऊपर गार्डरेल नहीं है या टो बोर्ड नहीं है या उसको जाने आने का एक्सेस में प्रॉब्लम है तो आदमी का फॉल हो सकता है. सो दिस इज़ वन हजार्ड्स. नेक्स्ट वन इज़ द स्कैफोल्डिंग कोलैप्स. दिस इज़ अ वेरी सीरियस हजार्ड्स इन स्कैफोल्डिंग. सो दिस इज़ कॉज्ड बाय पुअर डिज़ाइन, ओवरलोडिंग और वीक फाउंडेशंस. अगर आपका फाउंडेशन सही नहीं है या उसको लूज सॉइल है तो ऐसे कंडीशन में आपने इरेक्शन किया या उसका डिज़ाइन बराबर नहीं हुआ है या उसको ओवरलोडिंग किया, उसमें काफ़ी मटेरियल रख दिया है तो उसी टाइम भी स्कैफोल्ड गिर सकता है. दिस इज़ अ बिग हजार्ड्स इन द स्कैफोल्डिंग. देन फॉलिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स is maybe tools or materials or debris dropping from the scaffolds, dropping from the heights. You can see here some of the material is falling from here or from the platforms. So this will cause the injury to the persons who are working below the scaffoldings. Next one is the electrocutions. So this is very serious hazards in scaffoldings. If the scaffold is placed too close to the power lines, जैसे कि अपने पावर लाइन्स नज़दीक से जा रहा है और स्कैफोल्डिंग उसके बगल में या आपने इरेक्शन किया है तो उसी टाइम कोई पाइप्स का मूवमेंट चलता है या जब असेंबली चलता है या इरेक्शन चलता है तो उसी टाइम्स कोई पाइप रोटेट करना है तो उसी टाइम्स उसमें टच होके इलेक्ट्रिकेशंस या इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट्स होने की संभावना बढ़ जाती है. So we have to be ultra careful while erecting the scaffolds near the power lines or the tower lines. Now, bad weather conditions is another hazards. या कोई heavy runs गिर रहा है या storms है या ice fall हो रहा है तो ऐसे केस में आप erections scaffolding नहीं कर सकते हैं या अगर करेंगे तो it will create a big hazards to the persons working on the scaffolds. The next one is the slip and trips. This is a common hazards. जहाँ जहाँ आपका प्लेटफॉर्म सही नहीं है या अनइवन प्लैंक्स आप असेंबल किए या प्लेटफॉर्म गीला हो गया है या उसमें ऑयली हो गया है तो ऐसे कंडीशन में स्लिप होने के चांस या ट्रिप होने के चांस बढ़ जाते हैं. So friends, this is all about hazards in scaffolding. So we will go to next and which is the precautions in scaffolding. सबसे important है आपको precautions आप क्या क्या लेना चाहिए ताकि आप hazards कंट्रोल कर सकते हैं और साथ ही साथ एक्सीडेंट भी कम कर सकते हो. So first one is the proper foundations. सो अगर प्रॉपर फाउंडेशंस रहेंगे या उसको प्रॉपर सोल बोर्ड एंड बेस प्लेट का इस्तेमाल करेंगे तो मेरे ख्याल से स्कैफोल्डिंग गिरने की या स्कैफोल्डिंग फॉल होने की संभावना कम रहती है. सो दैट्स वाई प्रॉपर फाउंडेशंस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट्स. दिस इज़ अ प्रॉपर फाउंडेशंस. देन नेक्स्ट वन इज़ द क्वालिफाइड पर्सनल. कभी भी आपको स्कैफोल्डिंग का यूज़ करना है या इस्तेमाल करना है तो देयर शुड बी प्रॉपर स्कैफोल्डर्स और उसको ट्रेंड स्कैफोल्डर बोलता है, उसका एग्ज़ाम रहता है एंड यदि वो क्वालिफाई होता है देन ही इज़ डिक्लेयर्ड एज अ स्कैफोल्डर. सो क्वालिफाइड टीम कैन इरेक्ट द स्कैफोल्ड और डिसमेंटल द स्कैफोल्ड्स. सो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इरेक्शन एंड डिसमेंटलिंग. So regular inspection is an important activity. We have to inspect the scaffolding every times before use, and we have to check any damages or cracks or defects, and there should be authorized supervisor to
check the inspection, to check the scaffolding. Now important is the guardrail and toe boards. There should be proper toe boards, then mid rails and top rails, so that the chances of falling will be less. So we have to install the guardrails, mid rails and toe boards to prevent the fall of persons. And use of PPEs. So we have to use the helmet, of course, then harness, safety belts and safety shoes is important. And so we have to use the safety belts with double lanyard, and we have to hook it properly to the railings or the top rails, so that he can work comfortably and he can move here and there also. So next precautions are safe access. We have to provide the access in the form of ladders or in the form of stairs, so that persons can use these proper access for going up and coming down. Now load limit is very important. There should not be overloading of the scaffolding. So we do not overload the scaffolding beyond its design capacity. अगर उसका कैपेसिटी है या लाइट ड्यूटी डिज़ाइन है तो उसको आप भारी भरकम मटेरियल नहीं रख सकते, या उसका मीडियम ड्यूटी है तो उसके अनुसार मटेरियल रखना है, या हेवी ड्यूटी है उसके अनुसार उसका इस्तेमाल होना चाहिए. So according to its strength and capacity, we have to use the scaffoldings properly. Housekeeping is the important topic. We have to keep the areas clean, neat and tidy. Basically the working platforms और access और जाने आने के रास्ते या स्कैफोल्डिंग के नीचे जो फ्लोर है या प्लेटफॉर्म है वो सही तरीके से नीट एंड क्लीन रखना चाहिए, ताकि इसमें से कोई स्लिप एंड ट्रिप का कोई हादसा ना हो जाए. नाउ वेदर कंडीशंस, अगर इसमें ज़्यादा स्टॉर्म है या बारिश है या आइसफॉल हुआ है, जैसे हमने पहले ही बात किया है, तो ऐसे सिचुएशन में वी शुड नॉट यूज़ द स्कैफोल्डिंग्स. ऐसे केस में स्कैफोल्डिंग नहीं यूज़ कर सकते हैं, या ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विंड है तो उसमें स्कैफोल्डिंग कोलैप्स होने के चांस ज़्यादा रहते हैं. तो ये सिचुएशन में वी शुड नॉट यूज़ द स्कैफोल्डिंग. सो नो मोबाइल मूवमेंट्स, जैसे हम पहले ही बात किए हैं, अगर ये कोई बंदा ऊपर है तो उस टाइम भी आपको उसको मोबाइल को या मोबाइल स्कैफोल्डिंग को आप पुश नहीं कर सकते हैं. एंड अगर पावर लाइंस नज़दीक से जा रहा है तो वहाँ भी उसको इलेक्ट्रिकेशन का भी खतरा रहता है. सो ऐसे सिचुएशन में आपको मूवमेंट करना मना है. सो नेक्स्ट वन इज़ मेंटेन द क्लियर एरिया बिलो. We have to keep the housekeeping, we have to keep the proper areas clean and neat also. So this is important. Now proper bracing and ties means we have to use the longitudinal bracings and transverse bracing, so that the scaffolding strength will be more and stability will be more. So there should not be chance of moving or falling of the scaffolds. So as far as ties is concerned, or the couplers we can say, for joining the bracings, ledgers and transverse bracings or longitudinal bracings, we have to use the couplers. There are different types of couplers in the markets to fit the scaffolding components. So these bracings and ties or couplers are very important, which will tightly fix the all parts of the or components of the scaffoldings. So electrical safety we have discussed already. We have to keep the minimum
3-meter distance or the 10 feet distance, it is shown here. So as per the standards, we have to keep minimum distances of any electrical parts, so that there should not be electrocutions or electrical accidents. And last but not least, tagging is a very important part of the scaffoldings. आपको ग्रीन टैग का इस्तेमाल करना है, आपको रेड टैग का इस्तेमाल करना है, एंड आपको येलो टैग का इस्तेमाल करना है. Green tags indicates about the safe for use, we can use safely. Then red tag is unsafe, or we should not use the scaffold. And yellow tag means it is a caution, or it is a restricted use. So this shows the meaning of the tags. So this is important. In addition to this, we have to follow the Indian standard 3696 part 1 and 2 for more details. This is accident shown if we do not use the safety belt, or if double lanyards, if you do not use the lanyards, so there is a chance of falling. Second one, we should not lean beyond the limit. Extra leaning is also dangerous to cause the accidents. So friends, we have discussed in details about the scaffoldings and scaffolding hazards, scaffolding precautions, and components of the scaffolding parts. I hope this video is very useful to you. So thanks for watching. Please subscribe to my channel.